शुक्रिया। ये क्या है? ये धनसक है। डांसक? इसमें क्या डालते हैं? दाल, सब्जी, गोश्त और मिर्च मसाले। ठीक है, दनसक एक प्लेट लाइए। Anjum ordered dansak, but he wanted to know what was in the dish. इसमें क्या डालते हैं? And the reply was dal, sabzi, gosht or mirch masale. Dal is lentils. Sabzi, as we've already seen, is vegetables. Gosht is meat, and of course, mirch masale are herbs and chili. Anjum might have asked, what do they put in the dal if perhaps he wanted to avoid garlic? Kumar, dal में क्या डालते हैं? दाल, लहसुन, गार्लिक, प्याज, अनियन और नमक, salt. Shukriya. Let's see Anjum order his meal again. तशरीफ रखिए। आज का मेनू लीजिए साहिब। शुक्रिया। ये क्या है? ये धनसक है। डांसक? इसमें क्या डालते हैं? दाल, सब्जी, गोश्त और मिर्च मसाले। ठीक है, डांसक की एक प्लेट लाइए। The sentence, dal में क्या डालते हैं, what do you put in the lentils, is a good example of a sound distinction that many English speakers find difficult to hear, at least until they get used to it. Dal and dalte are two different words with two different D sounds. The in dal is made with the tongue between the teeth in the same position as you put your tongue to say th in English, but you need to bring your tongue well forward. In our sound writing system, this is written as a small d. The, dal. To say the d sound in dalte, you turn the tip of the tongue back so that the underside of the tongue touches the roof of the mouth. In our writing system, this is spelt as a capital D, dalte. The, dal, d, dalte. The, dal, d, dalte. In this Urdu class in Croydon, teacher Ralph Russell is helping the students with the pronunciation of the and t sounds. The distinction between the small t, t, and the large t, t, is the same as between the small d, the, and the large d, d. अच्छा ये कौन है? ये Zoe है. And you've all been saying मैं रहती हूँ, the women amongst you, or मैं रहता हूँ, the women amongst you. You ask men आप कहाँ रहते हैं, you ask women आप कहाँ रहती है, and that the is not an English sound. You don't have it in English. It's called a dental T, but you've all been saying it all right. And the way in which you make it is that you touch your teeth with your tongue. And if I say those words in English, you'll hear the sound it makes if I use that T. You touch your teeth with your tongue. You can tell that's not English T. You touch your teeth with your tongue. Halima say rehti. Rehti. Rehta. Rehta. Rehti. Rehti. Fine. Linda? Rehti. Rehta. Rehte. There's that kind of T, and there is another kind of T that comes in Urdu as well, which is called a retroflex T. That is, you make it with the tip of your tongue turned back. The tip of your tongue turned back. I've just been given this delicious dish by our waiter Kumal. But being vegetarian, I just want to check if there's any gosht or meat in it. How do I ask Kumal? Kumal, क्या इसमें गोश्त है? जी नहीं, इसमें गोश्त नहीं है. Shukriya. He said no, there isn't any meat in it. Good.
I'm going to start eating right now. If, like me, you enjoy cooking Indian food at home, then you'll no doubt have been out and about buying herbs and vegetables. Nobody can truly claim to cook Indian food without using fresh coriander, dhania, fenugreek, methi, palak, spinach. Methi, fenugreek, has a very distinct smell and adds to the flavor of the dish no matter what you're cooking. Gordon and Anita are shopping in Handsworth, Birmingham. Gordon wants to know about the herbs in the shop. He picks up a bunch and asks Anita, "Ye kya hai? What's this?" She says, "It's called dhania. Isko dhania kehte hain." Gordon then asks, "Isko kya karte hain? What do you do with it?" Isko kya karte hain? Karte means do. There's a difference between the two words, kehte and karte, which you need to listen to carefully to hear. Isko kya kehte hain means, what do they call this? Kehte is the word for call. Isko kya kehte hain? But if you want to say, what do you do with this, meaning if it's something to do with food, what do you do with it to make it exciting to eat, you say, isko kya karte hain? Did you hear the difference? Karte has an R sound before the T. Isko kya karte hain? What do they do with this? Isko kya kehte hain? What do they call this? Isko kya karte hain? What do they do with this? Gordon asks Anita both questions. Listen for each one. थोड़ी सी ये रखते हैं। ये क्या है? इसको धनिया कहते हैं। अच्छा, इसको क्या करते हैं? इसको दाल सब्जी में डालते हैं। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं? इसको मेथी कहते हैं। इसको क्या करते हैं? इसको पकाते हैं। अच्छा, मेथी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मालूम नहीं। और उसको क्या कहते हैं? वो पालक है, उसको अंग्रेजी में स्पिनिच कहते हैं। अच्छा, स्पिनिच। Gordon now knows a lot more about the herbs used in Indian cooking. He picked up the fenugreek and asked Anita, what do you call it? Isko kya kehte hain? Anita says, isko methi kehte hain. It's called methi. But Gordon also wanted to know what you do with it. Anita says, isko pakate hain. You cook it. And she means here, you cook it as a main dish. Then Gordon wants to know, methi ko angrezi mein kya kehte hain? Remember, kehte means call. So you can probably guess that means, what is methi called in English? Fenugreek. Here's Anita and Gordon shopping again. Does Anita know what methi is called in English? थोड़ी सी ये रखते हैं। ये क्या है? इसको धनिया कहते हैं। अच्छा, इसको क्या करते हैं? इसको दाल सब्जी में डालते हैं। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं? इसको मेथी कहते हैं। अच्छा, मेथी। इसको क्या करते हैं? इसको पकाते हैं। अच्छा, मेथी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मालूम नहीं। और उसको क्या कहते हैं? वो पालक है, उसको अंग्रेजी में स्पिनिच कहते हैं। अच्छा, स्पिनिच। I am sure that by now you can ask, what is your name? आपका नाम क्या है? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? And you can talk about your family and what your job is.
In this program and the next, we're going to meet two Asian families and eavesdrop on a day in their lives. Today, Ashok and Geeta are going to be invited for Sunday lunch with Varinder and his family. They're both Hindi-speaking families, but some of the language you hear may not be acceptable to speakers of pure Hindi and Urdu. They could argue that this is the influence of Punjabi or Bengali or whatever the first language of the speaker might be. You'll hear several varieties of Hindi and Urdu spoken throughout the UK, but you'll still be able to understand what Ashok and Varinder are saying. नमस्ते गुप्ता साहब। नमस्ते अशोक, आइए आइए। आप इंडिया से कब आए? पिछले हफ्ते आया था। आपका ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप बहुत अच्छा रहा। हम वहाँ कश्मीर, आगरा, बॉम्बे और गोवा गए थे। आपके बेटे के मुंडन कैसे रहे? मुंडन बहुत ठीक ठाक रहे। मुंडन पर सभी रिश्तेदार आए हुए थे। हमने एक वीडियो फिल्म भी खींची है। तब तो कमाल हो गया। मैं इतवार को अपने दोस्तों को खाने पे बुला रहा हूँ। आप क्यों नहीं आए थे अपने परिवार के साथ? हमें उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। हम जरूर आएंगे, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए आइए। ये है अशोक, his wife गीता, अनिल, डॉली। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी वाइफ मधु। नमस्ते। मिलकर बड़ी खुशी हुई। ये कौन है? ये मेरी बेटी शैली। और ये कौन है? ये मेरा छोटा बेटा चिंटू। आइए बैठिए। मधु ने खाना बहुत स्वाद बनाया। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। तो नेहा कितने साल की होगी? 6 साल की होगी। अच्छा। अभी ये कोई फर्क है नहीं? अभी देता था। आप काम के लिए कितने बजे चलते हैं घर से? सुबह 8-9 बजे। मैं आना मेरी बाटी है। ये क्या है आंटी? ये बैंगन है। इसमें मिर्च है? नहीं, मिर्च नहीं है। तो मुझको भी थोड़ा सा दे दो। मैं देती हूँ। मुझको भी। इसको क्या कहते हैं? इसको पालक पनीर कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्पिनिच कहते हैं। अच्छा। इसमें क्या डाला है? इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। लीजिए ना। बस थोड़ा सा दे दो। जरा चावल पकड़ाना। शुक्रिया। बहुत सुंदर लग रहा है। क्या इस चीज की तरह? In a Hindu family, we believe in shaving off hair of our sons anytime before the age of 3. The function is always attended by close relatives and friends. आप अनिल के साथ काम में मदद करती हैं? हाँ, जब इनको जरूरत पड़ती है तो फिर शॉप में जाते हैं हम। अदरवाइज बच्चों के साथ ही घर में बिजी रहते हैं। और ये कौन है? ये मेरे चाचा जी हैं। ये भी दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पर आए भी थे एक बार। इनका नाम क्या है? इनका नाम मदन गोपाल है। ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरा छोटा भाई राजेंद्र है। और ये मेरे माताजी हैं। ये मेरी छोटी बहन है। उसका क्या नाम है? ये किरण है। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं, एक 6 साल की और एक 2.5 साल की। अच्छा, और आप कहाँ रहते हैं? नॉर्थ लंदन में रहते हैं। It's a good idea to practice the language as often as you can. Why not go for an Indian meal tonight and impress the waiter by asking for the menu in Hindi or Urdu? Make sure you go to a restaurant with the BBC BOL CHAAL Club sign outside. This means that somebody in the restaurant can speak Hindi or Urdu and will be familiar with the sort of language used in the series. And don't forget to ask for all the dishes you choose with laiye. Until next week, namaste. Khuda Hafiz. खुदा हाफिज।
Namaste and welcome to Hindi Urdu Bol Chaal. This program is about asking for something in a shop or market and asking how much something is, as well as ways of saying where something is, opposite or in front of. And we spend a day with a small businessman and his family, where there are plenty of opportunities to check up on the language you know so far. Assalamu alaikum. I went to Manchester to do some shopping on Winslow Road. And I went to a fairly typical Asian store which sells a wide range of foods. I wanted some basmati rice. Basmati chawal. After greeting you, the shopkeeper, dukandar, will ask, "What would you like? Aapko kya chahiye?" Aapko kya chahiye? What would you like? Aapko kya chahiye? Oma ji, aapko kya chahiye? Basmati chawal. I could say just the name of the article I want, but I particularly wanted to know if they have basmati chawal. Maybe they've run out. Have you got basmati rice? क्या आपके पास बासमती चावल हैं? Have you got basmati rice? क्या आपके पास बासमती चावल हैं? आपके पास really means near you. So I'm asking, is there rice near you? To ask, have you got basmati rice? You say, is basmati rice near you? क्या आपके पास बासमती चावल हैं? Here's how I asked for rice with the dukandar at Jilani's. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपको क्या चाहिए? क्या आपके पास बासमती चावल हैं? जी हाँ। आपको क्या चाहिए? क्या आपके पास नमक है? जी है। आपको क्या चाहिए? क्या आपके पास पालक है? पालक? जी नहीं। आपको और क्या चाहिए? क्या आपके पास गरम मसाला है? जी है। मेहरबानी। Asking for something in a shop is one thing, but asking the price is also, of course, important. The word for price is कीमत. इनकी कीमत क्या है? How much are these? इनकी कीमत क्या है? Rice is plural. That's why it's these. How much are these? Or in natural English, as I'm asking about rice, how much is it? इनकी कीमत क्या है? To ask the price of just one item from the shop, which is not plural in Hindi and Urdu, ask इसकी कीमत क्या है? How much is this? इसकी कीमत क्या है? I want 4 pounds of rice. 4 pound. But how much is it a pound? The dukandar says 40 pence ki pound. 40 is 40. 40 pence for a pound. Then the dukandar says, how many do you want? Aapko kitne chahiye? This is very like the first question she asked. Aapko kya chahiye? What would you like? But with the word for how many, kitne in place of kya. Aapko kitne chahiye? How many do you want? Remember, rice is plural. Aapko kitne chahiye? Here is the rest of Omar's conversation with the dukandar. इनकी कीमत क्या है? 40 पेंस के 1 पाउंड। आपको कितने चाहिए? 4 पाउंड।
लीजिए 4 पाउंड। शुक्रिया। Shopping in Asian stores is great fun, and you'll find a whole variety of goods, especially food which is hard to get at ordinary supermarkets. As a shopper, you need to be able to ask the dukandar, the shopkeeper, have you got, say, something like rice? क्या आपके पास बासमती चावल हैं? If you don't know the Hindi and Urdu for something, try the English word. Some words for food come from the Hindi and Urdu in the first place. For instance, chutney, chutney. You'll also need to ask, how much is it? इनकी कीमत क्या है? Or, इसकी कीमत क्या है? If it's just one item. The dukandar will probably start by asking you, आपको क्या चाहिए? What would you like? And then, आपको कितने चाहिए? How many do you want? Here's Omar buying rice again. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? ठीक है। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपको क्या चाहिए? क्या आपके पास बासमती चावल हैं? जी हाँ। इनकी कीमत क्या है? 40 पेंस के 1 पाउंड। आपको कितने चाहिए? 4 पाउंड। लीजिए 4 पाउंड। शुक्रिया। We'll return to the shopping in a moment. But first, some useful phrases. To say below or underneath, use ke niche. Ke niche. Underneath or below. Ke niche. This table is below the window. Ye mez khidki ke niche hai. This table is under or below the window. ये मेज खिड़की के नीचे है. के नीचे means under. के सामने means in front of. The chair is in front of the table. ये कुर्सी मेज के सामने है. ये कुर्सी मेज के सामने है. The chair is in front of the table. के सामने can also mean opposite. As it happened, I still needed more rice for the family and friends who were coming to dinner. So I had to go back to Jilani's for some more rice and herbs. There is a different person at the checkout. She asks me, what do I want? Aapko kya chahiye? The rice is not quite so near now. So she asks her son, her beta, to get it for her. He asks, where is it? Kahan hai? Then the dukandar says, is shelf ke niche hai. The rice is under the shelf. Is shelf ke niche hai. And by the way, why do I have to go outside? आपको क्या चाहिए? Basmati chawal. बेटे इनको बासमती चावल चाहिए। इस शेल्फ के नीचे हैं, यहाँ से लाइए। आपको और क्या चाहिए? धनिया। धनिया बाहर है दुकान के सामने। कितने पैसे? 1 पाउंड 30 पेंस। आपको क्या चाहिए? What do you want? I want basmati chawal. And why did I go outside? धनिया, coriander. धनिया बाहर है, दुकान के सामने. बाहर means outside. So धनिया बाहर है means the dhania is outside. But what about dukaan ke samne? The word shopkeeper, dukandar, comes from
दुकान, shop. And we know के सामने is in front of. So, दुकान के सामने means in front of the shop. The धनिया is outside in front of the shop. धनिया बाहर है दुकान के सामने. आपको क्या चाहिए? बासमती चावल. बेटे इनको बासमती चावल चाहिए. इस शेल्फ के नीचे हैं, यहाँ से लाइए. आपको और क्या चाहिए? धनिया. धनिया बाहर है दुकान के सामने. कितने पैसे? 1 पाउंड 30 पैंस. Phrases like के नीचे and के सामने are very useful if you're talking about your house or if you're having anything done in the house. You may, for instance, need to talk to the plumber about the position of the radiators because they're leaking or because you're having central heating put in. The first thing the plumber will want to know is, how many rooms are there in your house? आपके घर में कितने कमरे हैं? आपके घर में कितने कमरे हैं? How many rooms are there in your house? घर is house and कमरे is rooms. आपके घर में कितने कमरे हैं? And if there are 8 rooms, then you say 8 कमरे. 4 कमरे ऊपर और 4 कमरे नीचे. 4 rooms up and 4 rooms down. Or perhaps you have 2 rooms up. 2 कमरे ऊपर and 3 rooms below. 3 कमरे नीचे. If you want something, say मुझे चाहिए. To me, it is desirable. मुझे चाहिए. I want 1 radiator is मुझे 1 radiator चाहिए. See if you can follow what Kamal wants his plumber to install in his house. The plumber is coming to his house for the first time. He wants to know how many rooms there are, as well as where the radiators are to go. हेलो जी मुनीर साहब, क्या हाल है? आ जाओ. आपके घर में कितने कमरे हैं? 8, 4 ऊपर और 4 यहाँ नीचे. अच्छा, क्या रेडिएटर्स खिड़कियों के नीचे चाहिए? इस छोटे कमरे में मुझे एक ही रेडिएटर खिड़की के नीचे चाहिए. जी ठीक है. और ऊपर बड़े कमरे में एक रेडिएटर खिड़की के नीचे चाहिए और एक सामने. ठीक है. आपके घर में कितने कमरे हैं? How many rooms are there? Do you know how many rooms there are? 8 कमरे. 4 ऊपर और 4 नीचे. The plumber asks him, do you want the radiators under the windows? क्या radiators खिड़कियों के नीचे चाहिए? खिड़कियों के नीचे चाहिए? Yes, he does. 1 radiator under the window, एक radiator खिड़की के नीचे, and he wants 1 radiator सामने, in front, meaning here opposite. Kamal says, एक radiator खिड़की के नीचे चाहिए और एक सामने. I would like 1 under the window and 1 opposite. Here's the plumber talking to Kamal again. हेलो जी मुनीर साहब, क्या हाल है? आ जाओ. आपके घर में कितने कमरे हैं? 8, 4 ऊपर और 4 यहाँ नीचे. अच्छा, क्या रेडिएटर्स खिड़कियों के नीचे चाहिए?
इस छोटे कमरे में मुझे एक ही रेडिएटर खिड़की के नीचे चाहिए। जी ठीक है। और ऊपर बड़े कमरे में एक रेडिएटर खिड़की के नीचे चाहिए और एक सामने। ठीक है। We've been looking at the language you need to ask for things in a shop and to find out their price and to say you want something. You take a friend to a restaurant and it's her first visit. How do you ask, what would you like? You answer an advert in your local paper for some chairs and a table. You go around to look at them. How do you ask, how much are the chairs and how much is the table? Remember, asking how much two or more things are is not quite the same as asking for just one thing. You're interested in renting a friend's house in the country. How do you ask, how many rooms are there in your house? Kamre is rooms and ghar is the word for house. Be careful about the word order. Okay? How did you do? Here are the answers. The first question was set in a restaurant and you ask your friend, what would you like? Aapko kya chahiye? Aapko kya chahiye? The next question was about buying chairs and a table. How do you ask, how much are the chairs? Inki कीमत क्या है? इनकी कीमत क्या है? And to ask, how much is the table? इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत क्या है? And the last question was about that delightful holiday cottage in the country. How many rooms are there in your house? आपके घर में कितने कमरे हैं? आपके घर में कितने कमरे हैं? How many rooms are there in your house? आपके घर में कितने कमरे हैं? Have a nice holiday. If you would like more help and information on shopping, look at Unit 5 in the Hindi Urdu BOL CHAAL coursebook which goes with this series. You'll find plenty to practice in the exercises at the end of the chapter. Many Asian people run businesses often held by their family. And more people are setting up wholesale businesses to serve other Asian shops. Ashok saw a gap in the market for selling small tools and other hardware to small shops all over the country. Ashok speaks Hindi at home and to his customers. In this film, you will hear nearly all the language from programs 1 to 4. Anything difficult is subtitled or is in English. So this is a very good way of revising. In the film, Ashok explains his job, takes on a new assistant, and visits some of his clients. Look out for greetings, for Aapka naam kya hai? What is your name? And the reply, Mera naam Sneh hai. And for Aap kahan rehte hain? Where do you live? And the reply, Main London mein rehti hoon. Some of the language you will hear is spoken with an accent, mainly because the speakers have another South Asian language as their first language. So this is an opportunity to hear the sort of Hindi and Urdu you might find in places where there are many Punjabi speakers. I am married. My wife's name is Geeta. My son Chintu is 6. My daughter Shelly is 7. Hello, Daddy ji. Hello, Chintu. Namaste, Daddy ji. नमस्ते शैली और बेटे खाना जल्दी जल्दी ख़त्म करो मेरे स्कूल में देर हो जाएगी Daddy, टाइम तो होया है 8:30 बज चुके हैं और शैली आज आप स्कूल में क्या कर रहे हैं बेटे हम स्विमिंग जा रहे हैं अच्छा बड़ी जल्दी चम्मच पकड़ाना शुक्रिया चलो शैली चिंटू जल्दी कर अपना कोट डालो I import hand tools. My work basically involves traveling to my customers, taking orders and delivering. My wife Geeta helps me in the office. मैं पोस्ट ऑफिस चली जाऊंगी ठीक है जरा इस खत का जवाब लिख देना और उन्हें जल्दी सामान भेजने का शुक्रिया अदा कर देना
नमस्ते जी। नमस्ते जी, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। बैठ जाइए। शुक्रिया। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अविनाश दत्ता है। आप कहाँ रहते हैं? हैरो में। हैरो में कहाँ? 825 फील्डन रोड में। आप यहाँ कैसे आए हैं? कार में। अच्छा, तो मैं आपको नीचे काम समझा देता हूँ। आपका ज़्यादा काम जो है वो सामान उतारना और चढ़ाना है, और आपको ड्राइविंग भी करनी पड़ेगी। मेरे जाने के बाद जो टेलीफोन कॉल्स आए उनको अटेंड भी करना होगा। टेप लगा दो इसको। आइए अशोक, आइए। नमस्ते अरोड़ा साहब, सुनाइए धंधा कैसे है? धंधा ढीला ही है, ये बड़े DIY स्टोर की वजह से। इन्होंने ही हम जैसे छोटे दुकानदारों को मार देना है। ये तो चलता ही रहता है। बाल बच्चे तो ठीक है? सब ठीक हैं, बड़ी मेहरबानी। इनसे मिलिए अरोड़ा साहब, ये है मेरे नए असिस्टेंट मिस्टर अविनाश दत्ता। नमस्ते जी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप इंडिया में कहाँ से हैं? दिल्ली से जी। और यहाँ पे कहाँ रहते हैं? हैरो। हैरो में कहाँ रहते हैं? फील्डन रोड में। अच्छा। अजीज, वो ज़रा किताब पकड़ाना। अशोक, आपके पास जी क्लैंप है? जी हाँ, बोलो, और कोई चीज़ चाहिए? शुक्रिया। शुक्रिया। आओ। अशोक कहाँ हैं? कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मेरे नए असिस्टेंट अविनाश दत्ता से मिलिए, इन्होंने इसी सप्ताह काम शुरू किया है। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं हैरो में रहता हूँ जी। हैरो में आप कहाँ रहते हैं? फील्डन रोड में जी। आपके कितने बच्चे? मेरा एक बेटा है, उसका नाम अनिल है। ये मेरा बेटा है, इसका नाम प्रवीण है। नमस्ते। नमस्ते जी। ये सिर्फ आधा सामान है, बाकी का सामान कल अविनाश छोड़ देगा। तब तो ठीक है। Good luck with your shopping. You should have more success at the shops displaying the Hindi Urdu BOL CHAAL club sign. It means someone in that shop is ready to speak to you and take into account that you are a beginner. Until the next program, Namaste. Khuda Hafiz.